So here I am sharing with you the fourth tip how you can write an impactful speech. So I am sure if you're following my tips, you have drafted your speech. That means you have written down whatever you had brainstormed. Now comes the next part. Whatever you have drafted is not your final. Now you're supposed to cut down content which is not required. ओके अब आप उस पूरे ड्राफ्ट में से जो भी आपने लिखा है उसमें से वो सारे पार्ट्स हटाइए जो जरूरत नहीं है. अब आप कहोगे आई वांट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, देयर इज सो मच आई हैव, बट डू पीपल रियली नीड टू नो दैट? मे बी आप रिपीट कर रहे हो एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से. So go back to that draft and see what is it that you can remove. How is it that you can get at least 5-6 points in one? Make it concise. लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है आपको सुनने का. Think like that. एंड जो भी वक्त वो आपको दे रहे हैं आप कैसे उस लिमिटेड टाइम में अपना पॉइंट उनके साथ शेयर कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू विल गेट योर इम्पैक्टफुल स्पीच रेडी. सो फॉर दिस स्टेप just go back, delete all the irrelevant points which are not making any sense or not connecting directly to the message that you want to deliver. सोचो अपनी स्पीच को एक मूवी की तरह और इस मूवी को आप कैसे इन्विजन करते हो. That's how your next draft would be, right? Do write in the comments if redrafting helped you, and I'm going to come back with another tip. I'm Nidhi, your communication skills trainer, a public speaking coach, a Josh Talk speaker, and semi-finalist at the World Championship of Public Speaking.